अपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि हम रिसर्च कैसे कंडक्ट करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कुछ हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिकमेंडर सिस्टम्स। पहले भी बात हुई है, इस पर बहुत डिटेल पे बात हुई है। आज मैं आपके साथ कुछ स्टडी मेथडोलॉजीज, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो हियर वी गो। ये है हाउ रिकमेंडर सिस्टम वर्क्स बाय नेटफ्लिक्स, और इसके बाद हम डिस्कशन शुरू करते हैं। In 2006, Netflix famously offered a prize to solve a simple problem which had been around for years. All online commerce giants are fighting to get better at solving this same problem. Given observations of a user's past behavior, predict which other things that same user will like. For example, based on Alice's viewing history, will she like The Matrix or Grapes of Wrath? We can represent user preferences graphically as connections between people on one side and things on the other, such as movies. Here, the strength of connection is visually represented by the thickness of the lines. So the problem is to fill out all of these missing connections we don't yet know, shown in red. But because of the messy, unpredictable nature of people's tastes, we can never perfectly predict what they will like. Because, for one, it involves a guess about the future based on something you've never seen. And two, the answer is always in flux because people's tastes change over time. What we can do is try to estimate those values as best we can, using whatever data we have access to. So, regardless of the context, we can describe the problem in the following mathematical form. We use a matrix, which is a collection of numbers organized into rows and columns, where the rows are users and the columns are items, in this case movies. And each cell in this matrix contains a number that describes how much each individual likes each movie. For example, we could use a scale from 0 to 4, where 0 would represent I hate it, 2 is neutral, and 4 is I love it. At any given moment, there will be some set of preference data for users in movies, but it will be incomplete because users have only seen and rated a few movies each. And so the problem boils down to trying to predict these missing values. How should we make these predictions? There are two general approaches to this problem. The first is called content filtering, which is to use information we know about people and things as connective tissue for recommendations. It's like asking Alice questions about what kinds of movies she likes to figure out if she will like The Matrix. It begins by labeling each person and movies with some known attributes, or what we call features. For example, action and comedy. That means if Alice likes comedy and hates action, we can represent her as 3-0. Each movie is also mapped to each feature in the same way. For example, The Matrix has no comedy and lots of action, so we could represent it as 0-4. And to determine whether someone will like a movie, we need to multiply these factors together. So we could represent the strength of connection between Alice and The Matrix as 3 times 0 plus 0 times 4 equals 0. So our estimation is that she will hate the movie. So to make our predictions, we first need to gather this feature data for every user and movie. To simplify, let's return to a matrix representation. We can store this information in two matrices. One defines the mapping between people and features. The other defines the mapping between movies and features. And by multiplying these two matrices together, using matrix multiplication, we get an estimated strength of connection between every person and movie. And if we'd like, we can normalize our data to make sure the scale stays between 0 and 4 by dividing all values by 8 and rounding to the nearest 0.5. That's one way to solve this problem, known as content filtering. The problem is, it's overly simplistic and not very accurate. That's because there are obviously more relevant features of a movie than just comedy or action. The obvious way to improve this is just to include more features. If you recall when Netflix started, it did just this. It would ask new users to fill out a laundry list of questions about their preferences before presenting them with suggested movies. And this leads to the problem of having to collect all of this preference data on users. Not only is it a burden for users, it's also prone to failure, as
we aren't always great at describing our own preferences. Sometimes we simply can't explain why we like things. We just do. Which brings us to the other approach, called collaborative filtering. The motivation for collaborative filtering comes from the idea that you will probably like things people with similar viewing habits also like. This idea was popularized in this 2009 paper by Cohen, Bell, and Volinsky. So to begin, we can throw away the idea of dreaming up features used to connect people in movies. Instead, we flip things around and use the user preference data we do have to generate the features. For example, we might have this incomplete set of preference data, and we will instead learn or discover the relevant features based on patterns in this data. And this is done by simply reversing the problem. We first perform an approximate factorization into two matrices. And we can do this using a machine learning approach. The job of the machine learning algorithm is to guess values for those matrices, which will match the existing data in the preference matrix as closely as possible. The simplest approach is to simply guess numbers over and over until you arrive at a set of numbers which predict the data with the lowest error overall. Once this estimation is finished, we can multiply the matrices as before to fill in all of the missing values. It's important to note that we won't know exactly what to label these discovered features, so we call them latent features because they arise out of the underlying patterns in the data. You can think of them as an average or weighted sum of the patterns in the data. They are not based on a human-defined feature, such as comment. And that's the key insight behind this method. With content filtering, the features come from the human mind, whereas with collaborative filtering, the features are extracted directly from the patterns in the data. And this will predict the data in the same way, but more accurately. It's also important to notice that this kind of prediction is actually a form of compression, because we can represent a huge matrix of preference data by two smaller matrices of feature data. And once our feature data is determined or learned, we can throw away the original data we started with, because we can simply multiply the features together to recreate that data. The reason this is possible is because the preference data we started with is not random, but follow patterns which exist across people. If instead the preference data was filled with random numbers, we would not be able to compress it accurately because there would be no patterns to extract. This collaborative filtering approach has also been applied to a wide range of contexts, such as evaluating policy outcomes before they are implemented in the real world, known as synthetic control. For example, if we wanted to understand the effect of gun control or minimum wage increases in some city, we could look at the effect in similar cities first, which have implemented those policies to approximate the outcome using the same mechanism. So it is the patterns we share that allow this method to work. Recommendation systems based on these ideas are in widespread use today, whether it's movies, music, news articles, or anything else you search for online. The things that are recommended to you are based on patterns the machine has observed in other people who are similar to yourself. Okay, so this is the पहले तो ये आपके पास आ गया. Grammarly does more. So this is ये तो पहला आपने उसका देख लिया Netflix. Then we have another platform, Spotify. ठीक है? Let's see what Spotify does. ये म्यूजिक रिकमेंडर है. Netflix को जब आप देख लेंगे, थैंक यू काशिफ, जब Netflix को हम देख लेंगे एंड देन हम Spotify को देख लेंगे, so then we are going to move towards the other one. कि हम how we are going to actually क्योंकि हम हमारा डेली बेसिस पे इन प्रोडक्ट के साथ आप वास्ता आ गए. हम मूवीज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो उसमें रिकमेंडर का एक रोल है. सो दिस इज आल्सो वेरी इंपेरेटिव कि जो फ्यूचर में जो हमारा काम जिस तरीके से हो रहा है उसका भी एक रोल बनेगा. हम थीसिस किस तरह करते हैं, हम असाइनमेंट्स किस तरह करते हैं, ये सारी चीजें आप समझिए बात. तो इस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है.
अच्छा, अब ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको बता रहे हैं पूरे, चूँकि हमारे पास एकेडमिक टॉक तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री में यही चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, बिकॉज नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, साउंड क्लाउड, यूट्यूब, इनके रिकमेंडेशन सिस्टम्स काफ़ी कंज्यूम होते हैं दुनिया में। अमेजोन का जो है बुक या आइटम रिकमेंडर हो गया, अब दराज पे भी आ गए हैं रिकमेंडेशन चल रही हैं। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। आवर लाइफ, इन आवर लाइफ वी आर यूजिंग दीज 5-6 रिकमेंडर डेली बेसिस। ट्विटर पे भी है आइटम सजेशन, फेसबुक पे फ्रेंड सजेशन, तो ये हैं, ठीक है। अब ये म्यूजिक रिकमेंडर है स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई पाकिस्तान में काम नहीं करता, लेकिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हैं, काफ़ी काम हुआ है। सो जस्ट टेक अ लुक एट इट। Hello everyone, nice to see you. So we're going to be talking a little bit about music. I think a few of you might be aware of the concept. Various notes coming out into the air, and you can dance to it and sing, stuff like that. And my name is Oscar. I've been with Spotify for 9 years. The first 7 years I was the CTO of Spotify, and the last 2 years I've been running the personalization and discovery efforts at Spotify. So first of all, I want to just go through who we are and what we do. So at Spotify, we're obviously a music streaming company. I'm sure most of you are aware of what we do. We have 83 million subscribers, 180 million users, etc., etc. And we're also available in 65 different markets across the globe. My team, we're specifically focused on matching users and creators. So you can imagine that on the one side we have, 1 billion users or whatever amount, and on the other side we might have, 5 million creators. So the problem is, how do you match those together in an optimized way so both creators are happy and users are happy at the same time? Obviously, I'm not doing this myself, so I'm running a team of 230 people who are all kind of engaged and working on this problem. And what we do, the team and I, we're basically trying to do 3 things for the world. So number one, we're trying to make it easier to listen to music. So if you think about kind of the original story of Spotify was very much a self-serve type of platform where you would come and basically have to create your own playlist, handcraft them one by one, adding a track, etc. And users really thought that was an amazing service. They were really happy about that. But at the same time, we're kind of shutting out a lot of people who don't have the time, the energy, or the skills to be creating a lot of playlists for themselves. So what we're trying to do is to change that experience so you don't have to do all that hard work. You can come to Spotify, you can get great playlists, great sessions, great stuff without having to do all of that hard work yourself. The second thing we're trying to do is to help you discover and help you find new things. So we think about it as you as a user being on a journey with Spotify, and on that journey you get to find new exciting things that you wouldn't have found other way. So the idea here is that when you've been on the service for say 3 months, you wake up one morning and you realize that all of a sudden you found all these new artists, the new genre, some new podcasts, things that you didn't know before that are now enriching your life. And the third thing we're trying to do is also help creators and help artists. So how can we help them become the best version of themselves? How can we help them find the audience that they deserve? So you might be a DJ in Mexico and you're doing all this great stuff, but how can you find fans, perhaps 1,000 people in Indonesia, 1,000 people in Thailand, etc., etc., and build up that audience that would otherwise have been impossible to find? So here's some of the products that my team manage that help us achieve that. So we have a homepage. When you start the app, we'll recommend to you various playlists that we think are relevant to you. We have a search feature where you can go in if you want to
more specifically tell Spotify what you're looking for. You can type it in and you'll get responses. We also have a lot of playlists and sessions created for you. We have something called Your Discover Weekly. That's a weekly playlist with like new songs that we think that you might be interested in discovering. We have something called Daily Mix, which is a playlist of more your favorite stuff. So if you just want to have a convenient, pleasurable listening experience, you can go there and you'll get familiar stuff. We also have something called Your Time Capsule, which is kind of fun if you want to go back in time and listen to the stuff that you would have been listening to a long time ago. So now I'm going to talk a little bit more about how it works, what's going on under the hood. So you can think about the Spotify stack as a stack with 3 different layers. And there's machine learning and data science going on in all of these 3 different layers. The first layer in the bottom is essentially the data and the information. And here you'll find stuff like, playlists, user listening information, user age, all those kind of things. We also have a lot of data about the content. So we'll get information from the labels, but we will also download information from the web, etc., etc. And lastly, obviously, we also have the audio profile itself of the actual music. And here we'll be using a lot of machine learning techniques to clean the data and remove errors and etc., etc. And there's lots of examples. Like one silly example is that the release year that we get from labels is often wrong. So we have to do like a machine learning to clean that up and kind of get the release years in shape. In the middle box, we have a lot of shared models that basically are used by pretty much all the recommendation features we have. So basically, we have these central teams that build these models and maintain these models for everyone else. Some examples here are affinity. So you could basically ask, like, how much does this user like this artist? Or what are the favorite artists of this user? Or how much does this user like this track? We also have embedding spaces for similarities. So how similar are these 2 artists? How similar are these 2 tracks? Or give me 10 artists that are similar to this artist. Give me 10 tracks that are similar to this track, etc. And we also have clustering services. So you can send in, here are 20 artists, can you cluster them for me? Or here are 100 tracks, can you put them in clusters for me? So these are then all like central models, central things that all the various features will be using. And then in the top level, we have the actual features themselves. So we'll have teams who own those features, they build those features, they maintain those features, and there will be machine learning models as well. So these models are more specifically targeting, the satisfaction of that feature, and is this, a good feature right now? But it will be using from data from both of these other levels. Does that make sense? Okay, a little bit sense, okay. So now I'm going to go through a few examples of things that are important at Spotify. So example number 1 I'm going to talk about is embeddings. So basically we're talking about embeddings for tracks, playlists, artists, albums, users, etc. So this all starts with this number. So this number here represents the amount of playlists that we were using yesterday when we were running this job. So this job runs every day. So this, it doesn't represent all the Spotify playlists. We have a lot more playlists, but we have a lot of logic that goes through and picks the playlists that we think are relevant for the training. And that kind of selection is actually pretty important. So if you train on all the playlists, things aren't going so well. So essentially, it's pretty simple in a way. It's just kind of, guess the missing track in a playlist type of logic. So, we're training on this, 600 million playlists, and we're trying to figure out if we remove a track, which track did we remove, what is the missing
missing track. And we're using a word-to-vec type algorithm, so not very fancy or very complicated in that way. And out of that, we get this cloud of similarities, so basically an embedding space. So in that space, you can ask a lot of questions. You can ask about similarities. You can ask about similarities between tracks, albums, and artists. You can get things that are close to you, a little bit further away from you. You can do a lot of stuff, basically. We also put users into this space, and the way that we do that is basically we look at your listening, like what you've been listening to. So you can pretend that kind of becomes a playlist, and then we take some kind of average out of that, and boom, you're also stuck in the space somewhere. So that's kind of how this works, and from this we can then calculate similarities between users and tracks. And you can imagine then that if we're, for example, doing a Discover Weekly, one of the steps in a long chain of steps to create a Discover Weekly will be to look into this space and figure out like some interesting candidate artists and tracks that are like close to where you are in the space, but are at the same time things that you've never heard or seen before. So a few thoughts on the secret sauce behind this embedding space. So obviously this space is pretty important to our recommendations, and it's one of the one of a few core building blocks for our features and our products. So number one is that we have a large volume of playlists. So that's very important in making this a high quality system. Number two that I think is really important is that this training data was created with a lot of love and a lot of care. So it's not just popping a random display somewhere and someone randomly clicking on, yeah, whatever, that sounds good. This is users who spend a lot of time putting this together for their own benefit, for something they want to listen to and spend a lot of time with. So there's a lot of care and love behind those 600 million playlists. And the third one is that we deployed the first version of this 9 years ago. So over 9 years, we've iterated and changed and tweaked and worked on this, day after day for a long, long time. So obviously, after 9 years, something is usually working reasonably well. I wanted to mention too that we also have a similar embedding space built on the audio profiles only. So you can imagine it's kind of the same question like guess the missing playlist, but the difference is that you only have the audio profile as your input. So instead of having the tracks, you have an audio profile. And this can be handy specifically when you have tracks that you know nothing about. So maybe there are tracks that are new released, or there's an artist you don't know that much about, or for some reasons there's kind of like a little bit of information. So that was kind of the first example that I want to walk through, the embedding space that we have. The second example that I want to walk through is around our homepage. So essentially, when you start Spotify, you will get into this page that we call the homepage. And this is a page where we recommend to you various playlists and various albums and things that we think are relevant to you at this point in time. So fairly similar to the Netflix start page when you come into Netflix. This is kind of the same idea. So we actually rebuilt this system fairly recently, and it's like one of the major projects that we're working on right now. And we deployed this originally sometime in April, May, I think. So here's a system that we call BART, which is a brand new system we built. And this BART system is basically, a recommendation system that will give everyone, a personalized homepage whenever you open your app. So this new system, we're taking into account a lot of different type of inputs. So it's not only your music taste and
what kind of music you like and what your favorite artists are, but it's also things like, which device are you on, what time of day is it, what's going on in the world, etc., etc. So we're making this system and trying to make this system context aware. So that also means that, if you open the home page a few different times a day, it would likely look quite different because it's changing with all of these context parameters. So essentially, what you can imagine here is that the problem is that we have all of these shelves of content, and we're trying to figure out which shelves should we be showing to at this given point in time. And we're also trying to figure out for each shelf which cards should we be showing to at any point in time. So each shelf have kind of a confined spaces of cards. So, one shelf, to make an easy example here, could be a rock, for example, and then the possible candidate sets are like playlists that are relevant for a rock shelf, so to speak. And what we wanted to do here was to do an exploration and exploitation type solution. So we basically built a multi-arm bandit solution here. And, many of you are probably familiar with this concept, but the idea here is that, if you're very sure about the piece of content that you're trying to recommend, then you'll either just recommend that piece of content, or you'll choose to ignore it and kind of throw it in the bin. But if you're a little bit less sure of this piece of content, we want to do some exploration instead so that we can learn more about this content. And the reason why this is important is because recommendation systems tend to become very biased towards themselves, so to speak. So, the music that you recommend or the content that you recommend is the content that people click on, and therefore you'll tend to recommend it more. So by doing this exploration piece, you'll get to make sure that you learn about other potential content candidates so that you're not kind of trapped in this little bubble. So essentially, we use this really simple thing called epsilon greedy, and the way it works is pretty simple. So you flip a coin and you kind of decide the distribution, and depending on the randomness here, you either pick a random piece of content, or you use your recommendation algorithm. And I think right now on our homepage, roughly 10% will be using random and 90% will be using recommendations. So that kind of means that every 10 shelf roughly will just be put there on random, and similarly cards every 10 will basically be there on random. But we're not randomizing across all possible playlists that we have, because it could be a bit weird to have like a piano playlist in a rock shelf. So you do the candidate selection, and then you do the randomization on that. So basically, you can imagine here we have the shelves, we have the cards. So for each time we're choosing a card one by one, we're doing this process where we're rolling the dice and we decide, whether we're going to take a random card or the best card. And similarly for each shelf, we'll do the same. So some more kind of information things that might be good to know about the system. The system is optimized towards 30-second streams. So that means that if you click on a playlist and then you decide to listen to that playlist and you listen for more than 30 seconds, that will be like a win for the recommendation system. We retrain this model once a day. And we retrain it based on the interaction data that we were collecting, and we also built the system to debias that data for a positional bias. So basically, that kind of means that if you click on whatever's in the top left corner, that will tend to be a little bit less worth than if you scroll down a lot and you click on something further down. So that was kind of my second example that I wanted to talk about, and now I'm going to deep dive into the third and the last one here. So we also spend a lot of attention thinking about the objective function. So I'm going to talk a little bit about Discover Weekly and the objective function there.
So first, explain again a little bit more what that feature is. So basically, every week we'll be creating massive amounts of daily, weekly playlists for all our users and sending those out to all our users. So once a week, every user on Spotify will get a new specific playlist with, say, 20 tracks that we think would be interesting for you to discover. So the question here is like, how do we know whether a user was happy or not? What type of objective function should we have for the recommender that we're training here? So we started to do some investigation here, and we looked at a lot of different signals. You can imagine, you can look at, do you go to the album and view the album of that track? How long did you stay on that album page? Did you add stuff to your playlist from that Discover Weekly? Did you add stuff and then listen to it further down the week, maybe like a few days later in the week? So those are interesting signals that we start to look at. So the first thing we did was kind of look at how we evaluate Discover Weekly today. And today, or before, I guess I should say, we looked a lot at how much streaming time do we get, do users come back week on week to this feature, etc. But one of the interesting things we found was that actually the metrics we were looking at were not really that good approximations for satisfaction, because if you think about listening time, it basically turned out that a lot of users will look at Discover Weekly and they will take track. मुसाफिर शाह बेटा, ये जो दोनों लेक्चर्स हैं ये YouTube पे अवेलेबल हैं, ठीक है? मैं आपको चैट पे भी कॉपी कर दिया इसको, तो इन केस अगर आपका लेक्चर पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो ये लेटर ऑन आपको अवेलेबल होंगे ये YouTube पे, ठीक है? डोंट वरी. And put it in another playlist for later listening, and then they will listen in that later playlist. So maybe they were like super happy, but we didn't see because, the listening happened somewhere else. We also found that some users would come back to Discover Weekly because they found that last week sucked so much, so they wanted to come back to see if this one was better. So week-on-week retention was also a little bit dubious way to assess whether your Discover Weekly was good. So the first lesson learned was that, holy smokes, you better know what you're optimizing for, type of revolution. So this was a team that we put together that was a multidiscipline team. So we had basically a user researcher, a data scientist, and a data engineer who worked together on this project. So we did user research studies, we did data science studies, and we wrote a lot of code with our data engineer. So the first thing we found was that essentially there are like 4 main ways that users use Discover Weekly. So there's not just one way. So some examples are that some will put it on and listen to it in the background, while others will like drag tracks into another playlist and listen later. But there were 4 main ones, and what we found there was that it was hard to just say that this particular task is a good signal of users being satisfied, because it varied depending on the goal. So that was a little bit difficult, and we did find some that kind of worked across all of them. So basically what we ended up doing was building a machine learning model that tried to assess your satisfaction with this week's Discover Weekly. So first we would take into that model all the interaction data from how did you interact with this week's Discover Weekly. What did you do? What did you not do? Did you listen later this week? Did you scroll? Did you click? Did you dwell on the album page? All that kind of stuff. We also use historical data because we found that what was important was to look at the kind of the relative change for each user. So the interesting question is not do you do X more than this amount? The interesting question is how much of this do you do this week compared to last week or the week before? And the third thing we add is that clustering data, essentially classifying which of these 4 goals that you belong to this week. And what was really interesting is that we found that the last one here was actually the strongest influencer on the model output. So knowing which of those
the goals that you have as a user, or which of those ways, is really important for assessing the satisfaction. So what we did here is we trained this against quite a few different targets, but one of them was basically survey data. So we did a lot of survey data and used that as training. And right now what we're doing, kind of the next phase, which we're in the middle of now, is basically building a learn-to-rank model that is essentially recommending and train against this metric. So the idea here is that we can train directly against this metric as a target. So if any of you are users of Discover Weekly, you might find out in a few months or so whether this was better or worse. And so that was kind of my 3 deep dive examples. So now what I'm going to do is move into just a little bit more high level, talk about things that we're working on right now. So first of all, we're working more on this kind of idea of how can we, in a deeper way, understand whether the user is satisfied or not. So how can we go beyond, optimizing for clicks or optimizing for scrolls or etc., etc. So basically trying to have a tighter causation between the user actually being happy and the thing that the model is optimizing for. So we talked about earlier how we did that for Discover Weekly, but we're also now towards kind of the tail end of doing this for search, doing this for our homepage, and doing this for playlist listening, playlist consumption in general. We're looking at, how can we optimize towards 2 objectives at the same time. So this is really interesting for us in a lot of various ways. One way you can imagine here is that you're optimizing for kind of immediate satisfaction and long-term satisfaction at the same time. So immediate satisfaction might be like, yes, these are my favorite tracks, I'm going to be really happy to get them right now. Whereas long-term might be a little bit, but you're going to get bored if that's what you get all the time. So you need to also make sure that you're not bored 3 months from now. So here's this idea that, we could basically be using algorithms that optimize against 2 functions at the same time. So that's something we're working on. Here's another example of that where we're working on too. So you can think about fairness contra relevance. So in some sense, a fair playlist or a fair recommendation, and fair here is like fair from an artist perspective, because you can imagine that there could be a lot of fairness problems with how we help artists build their careers. And if you do things right, we're actually 2 recommendations that are kind of optimized for both, that are good for both. So at the same time as not compromising on the user satisfaction, you can also improve kind of the fairness score, so to speak, as kind of shown in this graph. We're spending a lot of time working on our voice experience. So for those of you who use Spotify on mobile, you can go into, if you click on the search tab, there's a little icon where you can click on that and you can enter voice commands. And here we're thinking a lot about how to best satisfy those requests that are a little bit more vague. So they're not play this artist or play this particular playlist, but they're a little bit more vague requests. And we're also thinking about and working on how can a user steer or control that session once it's actually started. So you can go into your voice, your mobile app and try that later on. Another thing we're spending a lot of attention to is podcast recommendations. So we think that there's an opportunity out there to do a lot better podcast recommendations. And here we're really interested to understand how can we better categorize and classify and understand the content of podcasts through NLP type technologies. And that was kind of all the things I wanted to go through. And then at the end, I just wanted to kind of end with saying that, what we're really trying to do here is to use all of these technologies to, in a much better way, match together artists and users. And we think that if we do that, we can kind of help everyone at the same time. So we can help more artists to make a living off of music,
And by doing that, we will create more content that will make music and podcast a lot more interesting for the consumer. So maybe consumers will then spend a little bit more time listening to music, a little bit more time listening to podcasts, and that will of course be good for the creators, hopefully also good for the users, and obviously also good for Spotify. So this is kind of, trying to get all three tides to rise at the same time through this type of technology. So that was all. Thank you, everyone. Okay. So these two presentations, one in Netflix, the other one in Spotify, आपने देखा. What were your thoughts? What are your thoughts about it? जी. What industry is focusing on? क्लास में आपके जवाब का इंतजार करूँ. सबने जवाब देना. अच्छा आज, वरना मैं इस पे मार्क्स लगा दूंगा, फिर मार्क्स कटेंगे आपके. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम बेटा. जी जी सर, बेसिकली ये स्पॉटिफाई में ये लोग का बात कर रहे थे कि किस तरह ये यूजर्स के मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस को एनालाइज करते हैं, जिस तरह इवन माउस मूवमेंट जो करते हैं प्लेलिस्ट के दौरान, कौन से वाले किस तरह इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह बेस्ट रिकमेंडेशन दे सकते हैं जो रिलेवेंट हो, जो इसकी चॉइस से रिलेटेड हो. इट इन सिंपल वर्ड्स वो चाहते हैं कि टेलर मेड सर्विस दे जो कंज्यूमर्स को. यानी इन लोगों ने इस तरह एआई को एम्बेड किया हुआ है इनसाइड देयर स्पॉटिफाई जो वो है वेबसाइट, कि बिल्कुल टेलर मेड सर्विस ऑफर करे. और ओवरऑल बिजनेस के बारे में इन लोगों ने बात की कि यार किस तरह हम रन कर सकते हैं. तो जबरदस्त मेरे ख्याल. और ये देखो, एक रिकमेंडर सिस्टम अगर प्रॉफिट बढ़ाने में, यूजर से पैसे निकलवाने में अगर कामयाब आ जाता है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट दिस होल बिजनेस इज ऑल अबाउट. ठीक है, बिल्कुल सर. तो व्हाट इज ऑल एल्गोरिथम्स ऑल. वेरी गुड नूरुल्लाह जी. बाकी सब ने जवाब देना. अच्छा, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा. नूरुल्लाह ने जवाब दे दिया, बाकी सब शुरू हैं. चलें, बताते जाए और नेक्स्ट स्टूडेंट स्विच करता जाए खुद ब खुद. सवाल ये है, व्हाट इंडस्ट्री इज फोकसिंग ऑन. नहीं जवाब देंगे मैं फिर क्लास खत्म कर दूंगा. सर आजकल जो स्टेट ऑफ आर्ट जो चल रही है सर टेक्नोलॉजी, वो रिकमेंडर सिस्टम की है सर. ठीक है. इन्होंने बात अभी इस वीडियो में भी कही कि 90% जो हमें रिकमेंडेशन आते हैं वो हमारे ही डेटा से जो कि उन्होंने लिया होता है सर, उसी से आ रहे होते हैं. तो सर ये एक तो मतलब यूजर को ग्रैब करने में, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी, सर आपने भी शुरू में कहा था कि कोई दराज है, ऑनलाइन सेलिंग कोई ऐप हो, कुछ भी हो सर हमारे पास, तो सर वो बहुत आसानी हो जाती है. यानी फॉर एग्जांपल आप जिसके लिए सर्च कर रहे हैं उसी के साथ क्या आपको और भी रिलेटेड आइटम्स मिल जाते हैं. तो सर इनसे इनकी सेल्स भी इंक्रीज हो जाती है, और सर मार्केट में मार्केट होल्ड भी हो जाते हैं. क्योंकि मुझे अगर न्यू आइटम्स बताएंगे तो जारी बात है सर, मुझे अगर कोई अच्छा आइटम लगेगा तो मैं वहां से वो बाय करूंगा. ठीक है, वेरी गुड. आगे बताएं. ठीक है, वेरी गुड जी. शाबाश काशिफ. नूरुल्लाह वेरी गुड जी. सुनीला इम्प्रूविंग कार्ट वैल्यू एंड इकोनॉमी. वेरी गुड. बिल्कुल. बासित प्रोडक्टिविटी. बासित ये बताएं ना कि देखें रिकमेंडर, ये तो सिर्फ ई कॉमर्स तक बात हो रही है ना. ठीक है. सुनीला, कार्ट की वैल्यू और इकोनॉमी की जब बात होती है तो हम ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू में आ गए. जब हम इसमें आगे चलते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूजिक, उसमें तो देखिए इकोनॉमी और ज्यादा वो एलिमेंट नहीं होगा. वहां पर क्या होने की कोशिश हो रही है जी. शाबाश, आप पार्टिसिपेट करें आप चारों लोग. शाबाश जी. क्या कहते हैं आप बासित और सुनील, आप क्या कहते हैं? टेक्स्ट में मुझे बता दें या जिस तरह रियली बता दें, जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगता है. देखिए मेन आइडिया ये चीज है ना कि हर चीज सर्च नहीं हो सकती. अब मैं
इस एक बात एक छोटी एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, इमेजेस बढ़ रहे हैं, वीडियोस बढ़ रही हैं, क्या हमने सब देखी हैं? सब हम नहीं देख सकते। अमेज़न पे पता नहीं क्या कुछ नहीं बिकता, क्या हम हर चीज़ हमने देखी हुई है? नहीं। लेकिन हम कोई ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि जो हमें हमारी पसंद की चीज़ें दिखाता जाए, वो हमारी पसंद नापसंद पे समझे। सर्च का उलट रिकमेंडेशन है, ठीक है? एक दफ़ा इनपुट दे दो तो वो रिट्रीव करके देते थे कीवर्ड, यहाँ पर उलट काम हो रहा है। एक दफ़ा उसको सर्च दे दो तो वो बाकी उसके मुताबिक वो फिर एक मैकेनाइज तरीके से काम शुरू करेगा। और हो सकता है इस दौरान में यूजफुल चीज़ भी मिल जाए, सरप्राइजफुल चीज़ मिल जाए, तुम उसको ढूंढ रहे थे नहीं मिला, एकदम से सामने आ गया, दोनों काम हो सकते हैं। देखो मैंने जो रिसर्च की ना रिकमेंडर्स उसमें भी यही था। स्टूडेंट जब असाइनमेंट्स लिखते हैं, क्विजेस करते हैं, थीसिस पे काम करते हैं, रिलेटेड वर्क तो लिखते हैं ना आप लोग, रिकमेंडर को रिलेटेड वर्क तो मैं दिखा देते हैं। अक्सर यह था कि उसमें कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा तुमसे मिस हो रहा हो और वो बिल्कुल कोई डाइवर्स या बिल्कुल नया या यूजफुल सी कोई चीज दिखा दे। आप बात समझ गए? दिस इज द होल स्टोरी ऑफ रिकमेंडर सिस्टम। आप मेरी बात समझ रहे बेटा? आप सब मुझे फीडबैक दे सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा, हाँ ये बहुत बड़ा एक दायरा है। हम रिकमेंडर सिस्टम्स आपके सब्जेक्ट ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वन ऑफ दोज मशीन लर्निंग प्रोडक्ट है जिसके साथ हमारे आईटी यूजर्स का तकरीबन रोजाना का इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल अब मैं एक तरफ आपको ले जाना चाहूंगा, जैसे गूगल स्कॉलर है, ठीक है? गूगल स्कॉलर, ठीक है? अब ये आप जब पेपर पे कोई सर्च करते हैं, वो तो ये आपने कर दिया और ये सर्च रिजल्ट्स आ गए। भाई आप सब मुझे हाँ ना में जवाब दे, आप सब समझ रहे हैं? सर ये आ रहे सर, फीडबैक्स आ रहे हैं, ये चैट आप ऊपर है सर। हाँ ओके ओके, ये आ गया। अच्छा ठीक है, डिस्कवरी बिल्कुल, वीकली रिलीज रिटर्न, वेरी गुड, शाबाश समीत, सुनीला गुड, बासित शाबाश, अमाद, हमेरा, रिश्मा शाबाश, ठीक है, मुसाफिर शाह बेटा, ठीक है। ये अब सिचुएशन ये है कि हम एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं जिसके साथ रोज का काम है। तो मशीन लर्निंग कैसे प्रोडक्ट जिसके साथ रोजाना का वास्ता पड़ता है, वो रिकमेंडर इज वन ऑफ देम, ठीक है? अच्छा अब ये मैंने सर्च दिया, रिजल्ट आ गया। इसी सर्च रिजल्ट में साथ में रिलेटेड वर्क किया, अब रिकमेंडर है, ये रिलेटेड वर्क किया तो ये इस पेपर से रिलेटेड आर्टिकल्स आ गए, ठीक है? मैंने भी अपनी रिसर्च में आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल्स में क्या किया था। ये पोर्टफोलियो, यहाँ पर अब क्या किया था मैंने, यहाँ पर ये आपके सामने नजर आ रहा है। जो बेसिक रिकमेंडर था वो इसी भी सादा था, मैंने इसका इंटरफेस बल्कि वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिक रिकमेंडर है, आर्टिकल रिकमेंडर। आप यहाँ पर फाइल से ऐड करके यहाँ पर एक बिब्लियोग्राफिक फाइल इंसर्ट कर दे, जैसे वो आप रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में डालते हैं ना, इसमें आप डाल देते हैं। जब आप डाल देते हैं आप उसके बाद रिलेटेड वर्क दबा देते हैं, यहाँ से फाइल डाल देते हैं, यहाँ पे फाइल आ जाती है। फाइल को क्लिक करते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वो उसके बारे में बताएगा, रिलेटेड बताएंगे। बैक एंड में मिस्टर डी रिकमेंडर है, वो आपको एक रिकमेंडेशन है इस पेपर की, उसको क्लिक करें, इसकी रिकमेंडर बनेगा, इसकी क्लिक करें, इसकी बना देगा। मैंने इसी यूजर इंटरफेस को यहाँ पे कर दिया क्योंकि रिकमेंडर सिस्टम रिसर्च कहता है कि इंटरेक्टिव और यूजर इंटरफेस से रिकमेंडर की अपनाइयत, उसकी यूजेज डाइवर्सिटी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखें, मैंने एक वर्ड क्लाउड बनाया जो कि एब्स्ट्रैक्ट से बनता था, टॉप वर्ड्स उसमें आ जाते थे। ये वही वाली लिस्ट है, लेकिन देखो यहाँ पे भी लिस्ट है, यहाँ पे वही वाली लिस्ट है, और यहाँ पे ऑथर क्लिक करो तो गूगल स्कॉलर से वो भी पिक हो जाता था, और ऑथर्स के साल और ये इनकी ये जो ग्राफ है इसके ग्राफ चार्ट है। और जब आप ऑन माउस ओवर लें तो उसके साथ वो साथ में ये भी बता देता था कि भाई ये कैसे ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो भाई कहने की बात ये है असल में कि the main idea was that we were actually focusing on how recommenders and systems change and take place, how the system change take place over the time, और कैसे रिकमेंडर अब आपके थीसिस और आपके डेली रिसर्च वर्क में काम करते हैं। अब नॉर्मली स्टूडेंट तो इस तरह का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, गूगल स्कॉलर भी तकरीबन यही चीज़ है। इसको मैंने यहाँ पे किया, फिर इसको अपग्रेड किया, अच्छा ये तो कर दिया ना, ठीक है। फिर दूसरे रिसर्च में मैंने क्या काम किया, उसमें मैंने फिर एक ये सिलसिला चलाया
इस तरह का एक सिंपल भी बनाया हुआ था, उसमें यहाँ पे ऑथर्स का वर्क नहीं था, सिंपल मेन वेबसाइट थी, लेकिन ये दिस वाज जस्ट अ प्रोटोटाइप। सबर करें। अच्छा, इसके बाद फिर ये वाला इंटरफेस बनाया, ये वाला, उसमें भी यही था, फाइल डालो, यहाँ पे बिbliography आ जाती है, यहाँ से फिर रिलेटेड आर्टिकल दबा दो, यानी यहाँ पे जो जितने भी आर्टिकल की लिस्ट है, किसी आर्टिकल को क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, रिलेटेड आर्टिकल ये आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से शफलिंग करो, रैंडमाइजेशन करो। रैंडमाइजेशन में फिर ये चीज आ जाती है कि हो सकता है कि यार कोई ना कोई मतलब यूजफुल चीज हो। अब ये एक्यूरेट है, ये वाले रिकमेंडेशन जो है ये आपके टॉपिक जो आपने सर्च आइटम दिया उसके साथ जो रिकमेंड उससे हाईलाइट करो, पहले 3 उनका चार्ट है, आप माउस ओवर आते तो इनका नाम आता है। लेकिन ये जो बाकी 5, 6, 7, 8 नंबर पे जो रिकमेंडेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि रिलेटेड भी है लेकिन थोड़ा सा हटके। और यहाँ पे ऑथर क्लिक करें, वही उस ऑथर का गूगल स्कॉलर से बाकी काम ग्रुप का, और यहाँ पे तारीख और सारी चीजें। सो इससे हमने ये रिसर्च में It also helps in the develop emotional connections by providing the content. So we found out that there is a positive user experience. It also helps in the developing emotional connections by providing the content according to his emotional state/desire through the recommended system. This will build mutual trust between system and user. Build a community or forum. ResearchGate का नाम सुना होगा आपने, ये ResearchGate है। It also helps in the developing emotional connections by providing the content according to user emotional state/desire through the recommended system. This will build mutual trust between system and user. Build a community or लोगों को forum. मैंने साइट किया तो उन्हीं का ही काम मुझे बता रहे, तो ये एक और तरीके से, ये कोई बेस पेपर या वो नहीं मांगता, बट हमने जिसको साइट किया उसकी रिकमेंडेशन दे रही है। ये क्या, तो मतलब ये कि हो सकता है मैं मेरा काम कि सिमिलर जो यूजर है वो भी मेरी तरह ही सोच रहा हो। तो इन चीजों का फायदा क्या होता है? इन चीजों का फायदा ये होता है कि भाई आपका जो करंट एकेडमिक काम है, करंट जो आप जो काम कर रहे हैं उसकी बुनियाद भी जा रही है वो मशीन लर्निंग पे की बेस पे हो रही है। ठीक है, यस सर। आप बेटा समझ गए ना बात? बिल्कुल बासित, ये यही सिस्टम है। ठीक है, और नुरोला यस द सेम सिस्टम, कि हमारा सारा जो सेंट्रिक हमारा जो ऑपरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड हो रहा है, यानी कि आजकल की जो भी एमएस के स्टूडेंट रिसर्च करें वो भी एआई ड्रिवन रिसर्च है। वो मेरे जमाने वाली नहीं है, मैंने 15 साल पहले तकरीबन एमएस में एडमिशन 13 साल हो गए मैंने एमएस किया हुआ, और मैं सर्च बेस होता था। आजकल का जो स्टूडेंट है वो एआई काम कर रहा है। बेटा समझ गए बात आप? आयात बासित समझ गए? कौसर, द मेन आइडिया कि आजकल का जो काम है वो एआई ड्रिवन काम हो रहा है। तो उस प्रोडक्ट्स, उनकी बैक एल्गोरिथम, उनके यूजर इंटरफेसेस, क्योंकि देखो रिकमेंडर सिस्टम का जो एक कॉन्फ्रेंस है मैं तुम्हें बता देता हूँ ना, एसीएम रिकमेंडर सिस्टम्स, ये इस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ना रिकमेंडर सिस्टम ज्यादा जो पॉपुलर और कामयाब हो रहा है वो यूजर इंटरफेस क्या हो रहा है। एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ 5% ऑफ सक्सेस। अब इस यूजर इंटरफेस को देखो, यूजर कंट्रोल कम है, बस यही स्लाइडर है। जो रिकमेंडेशन ज्यादा कोई कंट्रोल नहीं है, इस पे थोड़ा सा है कंट्रोल। मेरे वाले वो जो मैंने रिकमेंडर्स बने उसमें कंट्रोल भी है, मैनिपुलेशन भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, तो ये तुमने कहाँ से रिकमेंड कर दिया? तो ट्रस्ट इशूज कैसे हैंडल करते हो, देखो मुख्तलिफ बातें। ठीक है ना हुमैरा? ठीक है, मुख्तलिफ ये चीजें जिसको आप जब वो करते हैं तारिक, इन चीजों को आप चेंज करते हैं तो पता चलता है इन चीजों का कि हर एरिया का यूजर, हर सेक्टर का यूजर, हर इलाके का, मुल्क का, जेंडर का, हर उसका यूजर का अपने फर्क हैं। इवन ऑपरेशन में, जहाज उड़ाने में मुख्तलिफ रिकमेंडर्स, ये तो पूरी ब्रांच है। मैं आपको बताऊं ना, नेटफ्लिक्स में जो रिकमेंडर सिस्टम जॉब आती है, नेटफ्लिक्स ये मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ। ये देखो जॉब्स रिसर्च इन नेटफ्लिक्स, ये देखो जी,
ये देखो जी, ये आप देखिए सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट एल्गोरिथम्स रिसर्च, और इसमें ये रिकमेंडेशन की काम, पर्सनलाइजेशन की काम हो रही है। ठीक है जी, पर्सनलाइजेशन, रिकमेंडिंग फॉर द वर्ल्ड। ये जो है एलन जस्टिन, हाँ, डायरेक्टर रिकमेंडेशन सिस्टम रिसर्च। और ये कौन है? डायरेक्टर एल्गोरिथम। इनका अगर आप देखें तो रिकमेंडेशन, सो इनके जितनी भी आप, ये इंडस्ट्री की आज बात हो रही है कि हमारा, हम खाली फिल्म नहीं देखते, हम आजकल रिकमेंडेशन ड्रिवन सारा काम हो रहा है। जितना काम हो रहा है सारा रिकमेंडेशन ड्रिवन हो रहा है। बेटा मेरी बात आप समझ गए? ठीक है ना अमाद? यस, बिल्कुल सर। इसमें अब ये चीज है ना कि ट्रस्ट, रिकमेंडर पे ट्रस्ट कितना करना है, कितना उसका, वो सारी चीज चलनी है। मैंने तो खैर एक 3-4 साल बल्कि ज्यादा हो गया मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ, और सारी चीज यही है कि इंसान की पसंद को कैसे समझा जाए। ठीक है ना सुनीता? मेन आइडिया इसमें हमने ये देखना है कि अगर यूजर ने ट्रस्ट करना है रिकमेंडर पे, कितना ट्रांसपेरेंट हम चीज बना रहे हैं, कितनी ट्रस्टेबल, यूजर कंट्रोल कितना दे रहे हैं, कितना उस पर मैनिपुलेशन हो सकती है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना यूजर पे इंटरफेस फ्रेंडली है, एल्गोरिथम कितना एक्यूरेट है, कॉसर कितना एक्यूरेट एल्गोरिथम है। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। और ये सारे आपके रिसर्च टॉपिक्स हैं, फिर ये सारे आपके रिसर्च टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है ना? सो द मेन आइडिया इज के इस एंगल पे जब आप सोचेंगे देन यू विल कम अक्रॉस द मेन एलिमेंट, कैसे ये पूरी चीज डाइवर्स होती है। जी आप लोग कुछ कमेंट करना चाहेंगे? फिर मैं थोड़ा सा, मैं एक वीडियो आपको छोटी सी और दिखा दूं और फिर मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, आपने बात की थी ना कि यूजर इंटरफेस वाला रिकमेंडर सिस्टम, और फिर आपने हमारा एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं एक मिनट ये हेडफोन्स लगा दूं, ये चिड़ियों की काफी आवाज है, एक मिनट मुझे आवाज ही नहीं आ रही सही, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जी बेटा, जी जी सर, अभी आपने बात की थी ना कि यूजर इंटरफेस और रिकमेंडर सिस्टम, जी, और फिर आपने एक बात की कि एल्गोरिथम का 5%, और इसी तरह से बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आई कि एल्गोरिथम का 5% कैसे काम होता है, और ये यूजर इंटरफेस वाले रिकमेंडर सिस्टम वो आजकल क्यों पॉपुलर हो रहे हैं? बिल्कुल। ये अच्छा, इसका मैं इस तरह करूंगा कि मैं एक पेपर के थ्रू जवाब दे दूंगा। बिल्कुल सर, एक कमेंट मैंने भी करना था सर। जी प्लीज करें जी। हाँ, तो बेसिकली एक आर्टिकल में मैंने सर रीड किया था कि रिकमेंडर सिस्टम जो है एआई बेस्ड होते हैं। इनफैक्ट ये 70% आपकी सेल्स को इंक्रीज करते हैं सर। और जो भी कस्टमर को आइडिया ना हो कि क्या बाय करे, अगर रिकमेंडर सिस्टम उसको कोई अच्छी सी कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर तो वो बाय करते हैं। जो छोटा सा पुश होता है, इनफैक्ट वो वाला रिकमेंडर सिस्टम देता है। आई गेस 70% सर, इट्स क्वाइट अ लॉट। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये आ जाता है ना, इस बात का जवाब ये मैं साइटेशन से दूंगा। ठीक है, एक मिनट, ये टॉप ऑथर है इस एरिया में। ये मेरा आर्टिकल ये क्या है, ये मुझे अगर पूरा मिल जाता है तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज द बेस्ट आर्टिकल इन इंटरैक्टिव रिकमेंडर सिस्टम्स। ठीक है, द Netflix price between 6 and 9, several other challenges। ये था
मेन चीज जो प्रॉब्लम कर रही है ना यूजर को, वो है द ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ रिकमेंडर। आप ठीक है, वो जो जिस जगह से मैंने सोर्स से ये बताया ना कि रिकमेंडर की असल जो सक्सेस है वो यूजर इंटरफेस से, वो एक पेपर में लिखा हुआ था। अब वो यहाँ पर है, कहाँ पर है वो, ये एक मिनट, ये पेपर, अगर आप इस पेपर को देखें ना, ये इसको डाउनलोड करना पड़ेगा कहीं से। इट इज दी बेस्ट, और ये आपको इस सवाल का जवाब देता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। चलिए पेपर कर मिल जाता तो ये इसको वो कर देते। ये के यू लुबिन का आर्टिकल है, इंटरेक्टिव रिकमेंडर सिस्टम ग्रुप का। सो बेसिकली हुमैरा आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि देखो ह्यूमन फैक्टर्स बहुत बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। सबसे पहला इशू आपके पास आया है, वो ये आया कि यूजर ट्रस्ट का। दूसरा आपके पास आया है परसुएशन का, एक रिकमेंडर को परसुएसिव भी होना चाहिए। दूसरा आया है जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन। ये सारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं, क्योंकि अभी वो स्टेज आ रही है कि रिकमेंडर एल्गोरिदम भी यूजर इनपुट पे डिपेंड करता है, और जितना इनपुट आप यूजर से यूजर इंटरफेस के थ्रू ले सकते हैं, उसके बिहेवियर से ले सकते हैं, मशीन लर्निंग वाली बात है ना, जितना उसका वो बिहेवियर कैप्चर होगा उतना वो एल्गोरिदम ट्रेन होगा। सो ज्यादातर अभी वो जो रिसर्च थर्स्ट है वो उस तरफ आएगी। आप समझ गए बात में? जी सर। ठीक है, तो दैट इज द, जितनी हमारे पास अभी भी बेतहाशा रिकमेंडर एल्गोरिदम्स पे काम हो रहा है, बेतहाशा रिकमेंडर सिस्टम एल्गोरिदम्स पे काम हो रहा है। और रिकमेंडर सिस्टम के एल्गोरिदम्स पे अगर आप काम करें तो उसमें एक बात आपको समझ आएगी कि हमेशा याद रखें कि देयर इज ऑलवेज algorithm, but algorithm again has to operate in the real world, and the more it is closer to the reality, the more it will be acceptable to the business. देखो एक कंपनी है, वो एक सिस्टम को डिप्लॉय कर रही है, and it has to increase its sales, music, viewership या जो भी है. So that is the main thing. आप बात तो समझ गए? ठीक है। अच्छा, अभी एक और छोटा सा रिसर्च देखते हैं। नेटफ्लिक्स पे तो बात हो गई है ना, ये जरा देखेंगे। The most straightforward metric is mean absolute error, or MAE. Here's the fancy measuring recommender system accuracy. आपको याद है प्रेसिजन, रिकॉल, वो सारी बातें याद है आपको? उसी की थोड़ा सा रिवीजन किया। mathematical equation for how to compute it. It's not as complicated as it looks, so let's break it down. Let's say we have n ratings in our test set that we want to evaluate. For each rating, we can call the rating our system predicts y, and the rating the user actually gave x. Just take the absolute value of the difference between the two to measure the error for that rating prediction. It's literally just the difference between the predicted rating and the actual rating. We sum those errors up across all n ratings in our test set and divide by n to get the average, or mean. So mean absolute error is exactly that, the mean or average absolute values of each error in rating predictions. Remember, error is bad, so you want the lowest MAE score you can get, not the highest. Let's look at a simple example. Let's say we just have 4 ratings in our test set.
On the first one, our recommender system predicted a rating of 5 when the actual rating was 3. The absolute error in this case is 2. We just do that for every rating, add them all up, and divide by 4. So the MAE score in this case is 1.5. It's just that simple. A slightly more fancy way to measure accuracy is root mean square error, or RMSE. This is a more popular metric for a few reasons, but one is that it penalizes you more when your rating prediction is way off, and penalizes you less when you were reasonably close. The difference is that instead of summing up the absolute values of each rating prediction error, we sum up the squares of the rating prediction errors instead. Taking the square ensures we end up with positive numbers, like absolute values do, and it also inflates the penalty for larger errors. When we're done, we take the square root to get back to a number that makes sense. So again, you can just take the name of the metric literally. Root means that we take the square root of the whole thing when we're done. Mean refers to an average, and square error is the square of each individual rating prediction error. Let's walk through that same example. In the first rating in our test set, the error between the predicted rating of 5 and actual rating of 3 is 2, and the square of that error is 4. Just keep doing that for each rating in our test set and add them all up. Then divide by the number of ratings, take the square root, and this time we end up with 1.87. That's higher than the MAE score for the same data of 1.5 because it's penalizing us hard for predicting a rating of 4 on an item that the user hated with a rating of 1. Again, remember high RMSEs are bad. You want low error scores, not high ones. Now, like we said, accuracy isn't really measuring what we want recommender systems to do. Actual people couldn't care less what your system thinks you should have rated some movie you already saw and rated. Rating predictions themselves are really a limited value. You don't really care if my system thinks you'll rate up 3 stars. You care mostly about what my system thinks about the best movies for you to go see are, and that's a very different problem. So how do we end up focusing on accuracy and RMSE scores in the field of recommender system research? Well, a lot of it dates back to 2006, when Netflix offered a $1 million prize to the first person or group to achieve a 10% improvement on Netflix's own RMSE score on a dataset of movie ratings it made public. This was called the Netflix Prize, and that $1 million prize spurred a lot of research into recommender systems. Since the prize was based on achieving low RMSE scores, that's what everybody focused on, and that focus has rippled through time even today. And to be fair, there's not a lot of ways to measure a recommender system given only historical data to work with. Ideally, you want to measure how real people react to recommendations for things they've never seen before, and you just can't do that offline. If you're curious, the prize was awarded in 2009 to a team called Bellcore, and we'll talk about how they did it later on. But Netflix didn't actually end up using their research because they realized that RMSE just doesn't matter much in the real world. What does matter is which movies you put in front of users in a top-end recommender list and how those users react to those movies when they see them recommended. आप पॉइंट पे समझ गए, मेन पॉइंट पे समझ गए आप, जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो हर ये कोई इमेज प्रोसेसिंग वाली नहीं है कि इसमें एक्यूरेसी मैटर करेगी. Hello everyone, welcome again to our machine learning career track here at Code. आप बात पे समझ गए क्लास? जी सर. जी सर. देखो इमेज रिकॉग्नाइज करना 100% एक्यूरेसी के साथ वो और चीज है, वो और चीज है. रिकमेंडर को देखना और रिकमेंडर सिस्टम ह्यूमन फैक्टर के साथ कंबाइन होना वो और चीज है. आप बात पे समझ गए ना? जी सर. सर एक ब्रेक ले लेंगे, इस तरह कर लेते हैं, 10-15 मिनट्स की ब्रेक ले लेंगे और फिर दोबारा आ जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर. सर एक क्वेश्चन था मेरा सर. जी प्लीज. सॉरी, क्विज से रिलेटेड मैंने इनफैक्ट आपको ईमेल भी की थी. जी मैं मसूल हो गई, सॉरी. मैं असल में थोड़ा सा रिसर्च में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं बस पेपर भी चेक करूँ, क्विज भी देख रहा हूँ. डोंट वरी सर. ठीक है सर, आराम से. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.
इसमें से कुछ आर्टिकल शायद मैंने दिए भी होंगे ना, लेकिन ये आप दोबारा हम देख लेंगे। जी ओके अच्छा, ये आर्टिकल है, जरा काइंडली टेक अ लुक एट इट, रिकमेंडेशन सिस्टम इन एजुकेशन। इस पे जरा मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा। So how recommended system will change education, the way we are doing our masters and PhD। ये मैंने लिंक फॉरवर्ड कर दिया, जरा मुझे आपके कमेंट्स चाहिए इसमें। Abstract. See discussions, stats, and author profiles for this publication at https://www.researchgate.net/publication/322250529. Recommendation Systems in Education, a Systematic Mapping Study. Chapter in Advances in Intelligent Systems and Computing, January 2018. DOI 10.1077/978-3-319-73450-789. Abstract. Several researchers study recommendation systems to assist users in the retrieval of relevant goods and services, mostly used in e-commerce. However, there is limited information of the impact of recommender systems in other domains like education. Thus, the objective of this study is to summarize the current knowledge that is available as regards recommendation systems that have been employed within the education domain to support educational practices. By performing a systematic mapping study, a total of 44 research papers have been selected, reviewed, and analyzed from an initial set of 1,181 papers. Our results provide some findings regarding how recommendation systems can be used to support main areas in education, what approaches, techniques, or algorithms recommender systems use, and how they address different issues in the academic world. Moreover, this work has also been useful to detect some research gaps and key areas where further investigation should be performed. Like the introduction of data mining and artificial intelligence in recommender system algorithms to improve personalization of academic choices. Keywords: recommendation systems, education, e-learning mapping study. 1. Introduction. Systems that retrieve and filter the data through content and similar profiles are known as recommendation systems, RS. These systems are usually used within the e-commerce domain. For example, some websites, such as Amazon, through the application of RS allow offering the user recommendations for products that users do not know and could be of their interest. Suggested recommendations help to overcome the distressing search problem for the user. But this technology is not only used to sell products, but it is also used to suggest videos, YouTube, movies, Netflix, Friends, Facebook, among others. This demand spans across several domains,
among which is the educational domain. R's, which are applied in education, have the role of supporting teaching and learning activities through enhanced information retrieval. Nevertheless, there is limited information of the application of recommender systems in educational. Copyright Springer International Publishing AG 2018. Environments. Consequently, this study aims to summarize the current knowledge that is available concerning R's that have been employed to support educational practices. This paper is structured as follows. Section 2 explains the research method and stages applied for the systematic mapping. Section 3 provides the results of the mapping study. And finally, Sec 4 present our main conclusions. 2. Research method. We have performed a systematic mapping study by considering the guidelines that are provided in the works of Kitchenham 1 and Peterson et al. 2 to obtain an overview of recommendation systems in education. Our systematic mapping study involved several stages and activities. In the planning stage, the need for the mapping is identified, the research questions are specified, the search strategy is established and the mapping protocol is defined. In the conducting stage, the primary studies are selected, the data extraction is performed, and the obtained data is analyzed and synthesized. Finally, in the reporting stage, the mapping study findings are presented. The details concerning the planning and the conducting of our systematic mapping are presented in the following subsections. The reporting stage is described in Sec 3. 2.1 Research questions. Our research aims to examine an overview of the areas in education that can be addressed by current use of recommendation systems. Thus, the following research questions are presented: what are the educational areas covered by R's, and what are the approaches used to generate recommendations within educational scenarios? For further understanding, 3 research questions were added to support our primary goal. The idea behind the following research questions is that each one addresses different aspects of R's in education to identify gaps or issues with the current research. Table 1 shows all research questions of this mapping study along with their rationale. 2.2 Search strategy. The conducted mapping study was based on an online search from the following digital repositories: Scopus, IEEE Splore, ACM Digital Library and Web of Science. The mentioned repositories, which cover most of the specific conference proceedings and journals for our topic, are relevant to software engineering and computer science. The first part of the search strategy was to define the search string used for query. In this part, the paper's keywords, abstracts, and titles were searched, using the following terms with the combination of Boolean operator and or, recommender systems and education, or, recommendation systems and education. When using the search terms, in this process, we ensure that only relevant studies about R's in the context of education are included for further analysis. This was achieved by applying an inclusion-exclusion criterion on the mapping study to determine whether a paper should be included in the following steps. Papers that met the following criteria were included: papers supporting educational practices by using recommendation systems, full papers, academic journal, and conference proceeding studies. Papers that met at least one of the following criteria were excluded: papers that are not focused on education, papers presenting only development and implementation of a recommender system, papers not written in English. Duplicate reports of the same study in different sources, introductory papers for special issues, books, workshops, and technical reports, gray literature. 2.4 Screening process and selection of primary studies. Once the search results were available, a pre-selection criterion was applied to these papers. Researchers read paper title, abstract, and keywords to apply the inclusion criteria and consider that at least papers should mention the keywords presented in the search strategy. Then, the exclusion criterion was used during the full paper reading, generating what we call the primary studies list. 2.5 Data extraction and data analysis. During data extraction, selected primary studies were fully read and analyzed by researchers for further classification. Data extraction was carried out by breaking down each research question into more specific criteria in which a set of possible options was established. The idea behind this approach is that each paper will be classified with the same extraction criteria, thus making it easier the document categorization and data extraction. The possible answers to each research question and criteria are detailed in Table 3. Each paper can be classified based on the different options of each criterion. Further,
Our data analysis involved a quantitative synthesis based on the number of primary studies that are classified in each answer from our research questions. By performing the search strategy, we identified 1,181 papers extracted from digital database searches. Researchers read title, abstract, and keywords of the papers resulting from the initial search. The application of selection criteria produced a list of 206 primary study candidates. Finally, as a result of the whole screening process and data extraction, this work identified 44 primary studies. Each reviewed primary study was classified based on the possible answers of the main research questions. The results from the mapping study are structured according to the research questions, as shown in Table 4. Note that RQ1 and RQ5 are not exclusive. A study can be classified in one or. Table 3. Data extraction criteria. Research question. Criteria. Options RQ1. What are the educational areas covered by ours? C1. Areas in education. Academic choices. Learning activities. Learning resources. Academic performance. Vocational and educational training. E-learning RQ2. What are the approaches used to generate recommendations within the educational context? C2. R's approach. Collaborative filtering. Content-based. Hybrid approach. Knowledge-based. Other RQ3. Which platform is used for the recommender system deployment? C3. R's development. Desktop-based. Web-based. Mobile-based. Conceptual model RQ4. Which evaluation or validation strategies are applied to recommendation systems? C4. R's empirical validation. Survey. Case study. Experiment. Non-RQ5. What are the challenges addressed by adopting a recommendation system in the educational context? C5. Issues addressed by the Rs. Availability of information and content sharing. Personalized. Results of RQ1 show that around 47% of the papers reviewed are based on academic choices. Some studies like 3 to 7 reveal that the primary use of recommendation systems is to provide advice to students on their educational choices. This involves recommending students a place to study, which could be a faculty, university, college, or moreover support choices of specific academic courses or disciplines. Other studies focus on Rs for e-learning courses. The authors from 7 use recommender systems to suggest online courses from different vendors as an embedded software. Academic choices are not merely limited to the recommendation of universities and go beyond advising personalized courses. An example is 8, in which authors propose personalized curriculums. Other studies also focus on other aspects of education, like recommending candidate students to available scholarships. 9. Another area supported by recommendation systems is the e-learning. From the reviewed primary studies, 15 papers, 34%, were exclusively based on enhancing e-learning. Few studies have been focusing on. Another study, 11, proposed a hybrid recommender approach to support knowledge sharing, and from the analysis and extracted data, 11 paper recommender system find area. The remaining reviewed studies refer to resources and activities of the learning process suggest. Besides, authors in 14 show a different Rs with. The results of RQ2 revealed that the most frequent type of recommender system used in education is the hybrid approach. Around 46% of the papers reviewed are based on a combination of different recommender types. The main choice of a hybrid approach is to improve the performance of the recommender model and overcome the problems of other types of recommender, like collaborative and content-based filtering. Collaborative filtering, CF, accounts for around 30% of the reviewed papers. In CF, the recommendation is assigned based on existing relations between users and items. Studies that apply the CF approach do not require content or any information about items, rather CF produce personalized recommendations, because they consider other people's similar experience. Therefore they can suggest appropriate academic or educational matters by observing same. The web is the most adopted platform for using Rs in education. It is reported by the 52% of the reviewed papers. As displayed in Fig 1, web-based platforms are present in many areas of education, supporting different educational scenarios. In 16, authors describe an educational Rs developed on a web platform,
which recommends learning programming activities in a. The results for our Q4 revealed that 31% of the studies did not conduct any type of validation of the method, see Table 4. Around 18% of the studies presented Rs which had been validated through a survey. For instance, one of the main issues addressed by Rs is how to provide personalized recommendations. It accounts 43% of the papers reviewed. Some studies aim to give tailored suggestions to students and academics. Rs that solve the problems of availability of information are presented in 31% of the selected papers. Studies like 4, 7, 9, 18 make available the scattered information of different online courses, universities, faculties, study plans, etc. in a single repository which is accessed through the Rs. Prediction accuracy and efficiency is addressed in about 29% of the reviewed papers. When implementing and building Rs, some studies test the system to provide the most accurately. Overall, there has been significant interest in the use of recommendation systems in educational scenarios. However, due to limited information about how recommendation systems have been used in education environments, what approaches are used and recommendation systems in education, a systematic mapping study 945. How they address different issues in the academic world. Many researchers and practitioners are experiencing difficulties in retrieving relevant and useful information that summarize the utilities of using Rs for educational purposes. Therefore, in this work, we performed a systematic mapping study to investigate the use of recommendation systems in education. As the result of an automatic search on scientific databases, 44 primary studies were identified and thoroughly reviewed. From selected studies, relevant data was extracted and classified to get valuable insights about uses. ठीक है, परफेक्ट बात है, आगे बताएं। भाई बाकी स्टूडेंट्स हैं क्लास में कि खाली 2 ही हैं? सर इंटरैक्टिव इंटरफेस भी रिक्वायर होता है कि हम सर मतलब यानी कि अगर आप रिसर्च में प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, आप किस तरह का प्रोडक्ट मतलब चाहते हैं? जी, सवाल ये है कि नेक्स्ट अभी की जो एमएस चल रही है, रिसर्च डिग्री चल रही हैं, वो मशीन लर्निंग प्रोडक्ट के बगैर
डिफरेंट है। मेरे ज़माने में सिर्फ सर्च होती थी, अब रिकमेंडर सिस्टम इस्तेमाल हो रही है। इस आर्टिकल के मुताबिक कौन कौन सी नई चीज़ें आने वाली हैं जो कि हम मतलब हमारा जो स्टडी का तरीका होगा वो मशीन लर्निंग ड्रिवन होगा, यानी कि रिकमेंडर सिस्टम ड्रिवन हमारा सारा काम होगा। तो वो कौन कौन से नए काम हम कर रहे हैं? तो क्या आपको रिकमेंडर आगे आते हैं? जी जी ठीक है जी। What would you like to see in IMSciences? If there is a recommender for every student, क्या आप करना चाहेंगे? उसका इंटरफेस कैसा हो, काम करो, क्या हो उसका, क्या सिलसिले होने चाहिए? वो तो वो तो ठीक है बात, वो तो अंडरस्टूड है। उसका इंटरफेस कैसे हो, उसमें क्या फीचर्स हों, क्या उसमें नई चीजें हों? ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा बाकी स्टूडेंट क्या कहते सर हैं? दूसरा इसमें ये भी बताया हुआ कि अगर हम रिकमेंडेशन सिस्टम को यूज करेंगे रिसर्च के लिए तो वो हमें बेहतर रिसर्च गैप बता सकता है कि जिसमें मतलब हमें काम करना चाहिए और उस रिसर्च की वैल्यू होगी। तो रिसर्च गैप मेरे ख्याल में फाइंड करने में फैसिलिटेट कर सकता है, बता नहीं सकता, क्योंकि फिर तो बंदा ही खत्म हो गया। अगर जी कंप्यूटर सर ने खुद ही, बिल्कुल। फिर तो वो वाली बात हो जाएगी, वो क्या कहते हैं, वो जो रोबोट जॉब उड़ा रहा है, फिर तो सबसे पहले मेरी जॉब खत्म होगी। हाँ इस पर लिखा हुआ है कि दिस वर्क यूजफुल टू डिटेक्ट सम रिसर्च गैप एंड की एरियाज जहां पे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन वो सवाल पे आप समझ गए? ठीक है सर। आप मेरे सवाल पे समझ गए बुनियादी तौर पे? यस सर, कि मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताएगा लेकिन आइडेंटिफाई कर देगा हमारे लिए। हाँ, उसकी उसकी वजह यह है कि रिकमेंडर का सबसे बड़ा, देखो रिकमेंडर अभी एक दौर से गुजर रहा है। रिकमेंडर क्या हो रहा है जी? एक दौर से गुजर रहा है। वो दौर इस तरह का है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस हैं। वो चेंजेस इंटरफेस में, एल्गोरिथम्स में हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर बिल्कुल। ठीक है ना, अब बात यस समझ गए? अच्छा अब एक और सवाल का जवाब दें। आपको फ्यूचर में क्या लगता है कि नेक्स्ट आने वाले बैचेस जो होंगे उसमें और आपके रिकमेंडर में क्या चीज फर्क होगी? सर अब जो आपने बात की थी, मैं पहले भी उस पर बात कर दूं कि IMSciences में किस तरह से रिकमेंडर सिस्टम हो सकता है। तो अभी मेरे माइंड में आया कि जो लास्ट सेमेस्टर वाले होते हैं तो उनके लिए भी एक रिकमेंडर सिस्टम इस तरह से बनाया जा सकता है कि उनकी डिग्री कंप्लीट, यानी उनको ये रिकमेंड किया जा सके, सजेशन दी जा सके कि उनकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद उनके लिए कौन कौन से एरिया ज़्यादा सूटेबल है, किस तरह की जॉब्स में उन्हें जाना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें कोई सजेशन दी जा सके। परफेक्ट परफेक्ट, ये भी परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा और क्या सजेस्ट करते हैं? बाकी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं जी? बाकी स्टूडेंट्स सब वही क्या कहते हैं जी? आप लोग बाकी सब ये कुछ नहीं कहते? जॉब एरिया भी सर सजेस्ट करे कि कौन से मार्केट में वो जॉब ढूंढ सकते हैं। अच्छा ठीक है। वो अच्छा आप कहते हैं कि खाली एकेडमिक डिपार्टमेंट को ना आप वो करें, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी करें? हाँ बिल्कुल सर।
और बाकी सर वो रिकमेंड जो स्कॉलरशिप वगैरह आते हैं तो वो स्टूडेंट्स सिस्टम रिकमेंड करे जो एलिजिबल हो, बजाय कोई बायसनेस की जो ह्यूमंस यूजुअली। अच्छा, ये आपको पता है एल्गोरिथम बायसनेस एक बहुत बड़ा इशू है जी, यू नो दिस? यस सर, क्योंकि सर जब भी कोई भी रिकमेंडर बनाएगा तो उसके भी अपना पर्सपेक्टिव होगा, तो वो उस लिहाज से बायसनेस रखेगा सर। एक स्टूडेंट के लिए नहीं बनाएगा ना, वो तो पूरे एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए बनाएगा। हाँ, मतलब ये कि ये एक बहुत बड़ा हॉट इशू है। यस सर, बहुत हॉट। दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग इश्यूज इन रिकमेंडर सिस्टम, बायसनेस। और बायसनेस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? कोई है आपके डिजाइन में, कोई आइडियाज हैं रफली, मतलब बहुत टेक्निकल? सर मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, ये ना हो कि सिर्फ हम एकेडमिक को परफॉर्मेंस पे हो, किसी की प्रैक्टिकल कोई स्किल्स हो उसको देखना चाहिए, और इस तरह फैक्टर्स को हमने लाने हैं कि उससे एक अच्छा रिकमेंडेशन दे हमें। अच्छा, थीसिस सिलेक्शन में क्या हुआ था जब आप थीसिस टॉपिक सेलेक्ट कर रहे थे? सर बहुत मुश्किल था, खुद ही ढूंढना पड़ता था, ऑलरेडी काम हो चुका था, कोई रिसर्च वो गैप ही नहीं मिल रहा था जिस पे हम प्रोजेक्ट करें। ये सर ये भी है, अगर जिस टीचर से मतलब पूछेंगे तो वो मेनली हमें अपनी फील्ड के रिलेटेड गाइड करेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, वो तो इसलिए होगा ना कि वो अपडेट होंगे अपनी फील्ड से। यस सर, है ना? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, चलें ये बताएं कि चलें ये तो बात हो गई है, असाइनमेंट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं जब रिसर्च टॉपिक्स होती हैं सारी? अब देखिए, ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, बेसिकली एक प्रोडक्ट के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि कैसे एक प्रोडक्ट एक हिस्सा बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का। आप बात पे समझ गए? बिल्कुल सर। एक प्रोडक्ट जब किसी चीज का हिस्सा बनता है ना, तो उसमें बहुत मरहले होते हैं, उसमें बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, सारी चीजें होती हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब एक नए पेपर की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया ना रिकमेंडेड सिस्टम इन एजुकेशन। अब जरा ये बताएं कि ये एक आर्टिकल है, इंटरफेस की ताकत, व्हाट इंटरफेस कैन डू। ये आर्टिकल जरा देखें, ये व्हाट इंटरफेस कैन डू। अब आप बताएं जरा क्या हो रहा है जी। सर यूआई इंटरफेस आप कह रहे हैं? नहीं, ये एक आर्टिकल है और ये बता रहा है कि यूजर इंटरफेस से क्या कुछ हो सकता है। ये जरा बताएं कि ये क्या इसमें बात हो रही है। Enhancing recommendation diversity by a dual recommendation interface. Anonymous for blind review. Abstract. Beyond relevance, objectives of recommender system are getting more and more attention in the ELD. For example, a diversity enhanced interface has been shown positively associate with the user satisfaction. However, LE is known about how a diversity enhanced interface can help users to fulfill the various real world tasks. In this paper, we present a visual diversity enhanced interface which presents recommendations in a two-dimensional SCAER plot. Our goal was to design a recommender system interface to explore different relevance prospects of recommended items in parallel and stress their diversity. A very tricky article. A within subject user study with real-life tasks was conducted to compare our visual interface with a standard ranked list interface. Our user study results show that the visual interface significantly reduced the exploration efforts for the explored tasks. Also, the user's subjective evaluation shows significant improvement on many user-centric metrics. We show the user did explore a diverse set of recommended items while improving the user satisfaction. Keywords: recommender system, diversity, beyond relevance, user control. 1. Introduction. Recommending people in a social system is a challenging task. A user may look for other people for a range of reasons, for example, to reconnect with an acquaintance or to end a new friend with similar interests. 3. Is diverse use needs make it hard to generate a ranked list which ts all cases.
A specific case where a single ranked list might not work well is a parallel hybrid recommendation system that fuses several recommendation sources. In this case, different sources might be preferred for different needs. I.e., social similarity could work best for funding known friends, while content-based similarity could be used to ND people with similar interests. This is a wonderful but tricky article. Several authors argue that the best approach in this situation is to OER user an ability to control the fusion by choosing algorithms 3, 4, or data sources 1. However, it is not clear whether a casual user with no computer science background can tune the provided interface to adjust the results to their exploration interests. Providing a visual interface that makes the process of fusion more transparent, for example, showing recommender sources and their overlaps as set diagrams 12-19 could further address this problem. Yet the set-based approach has limited permission to make digital or hard copies of part or all of this work for personal or classroom use is granted without fee, provided that copies are not made or distributed for pro-T or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the RST page. Copyrights for third-party components of this work must be honored. For all other uses, contact the owner author, S. Rec SYS 2017, Como, Italy. Copyright 2017. Copyright held by the owner author, S. 123-4567-24-567/08/06. $15.00 doi, 10.475/123.4. Applicability, since it ignores the strength of relevance, which is a continuous variable. In this paper, we attempted to overcome the limitation of set-based visual fusion by exploring an visual fusion approach that represent a continuous nature of relevance aspects while keeping the fusion process transparent. When selecting a visual metaphor for the transparent fusion of recommendation sources, we focused on BER informing users about the diversity of recommender results. It has been demonstrated that a proper user interface could promote the diversity of information exploration. A diversity-enhancing interface evaluated in 6 lead to higher user satisfaction than the ranking list interface. Several attempts to design a diversity-focused interface using a dimensionality reduction technique to present the opinion similarity by latent distance are presented in 5, 15, 20. However, the clustering distance was not easily interpretable for a user to make a personalized judgment. In this paper, we attempted to use a SCAER plot 2-dimensional visualization to present recommendations with several dimensions of relevance. SCAER plot is known as an intuitive way to present multidimensional data aid. In our context, the SCAED plot interface was used to help users combine different aspects of relevance for each recommended item. The user can further alter the recommendation result based on the extent of each dimension. We conducted a user study in an international conference to compare the ranking list and SCAER plot interface. Our user study results show that the new visual interface did reduce the exploration efforts on the proposed tasks. Also, the user's subjective evaluation shows significant improvement on many user-centric metrics. We provide empirical evidence that the user explore a diverse set of recommended item while improving the user's straight-cation. 2. Beyond the ranking list. We propose a recommender system to help conference ends. Ending other relevant ends to meet with a dual interface that included a ranking list and a SCAER plot components. A ranking list is a classic way of presenting the recommended results in one dimension, from high to low relevance. The SCAER plot was added as a diversity-promoting interface to show the recommended result in 2 dimensions, with the second dimension used to reveal the diversity. Figure 1 illustrates the design of the dual interface. Section A is the proposed SCAER plot. The interface presents each item, a conference AND, on the canvas as a circle. The user can mouse over to highlight the selection. Section B is the control panel for the user to interact. The user can select the number of recommendation, the major feature, and the very good. अच्छा ये जो अभी मैंने आपको आर्टिकल भिजवाया है दूसरा वाला, ठीक है, enhancing recommendation diversity by dual recommendation interface. जी सर, दो इंटरफेसेस दे दिए हैं तो कैसे बाज़ औक़ात हम एक ही मूवी देख देख कर तंग आ जाते हैं। हम कहते हैं यार उस फील्ड में जरा नया टेस्ट, तो एक खाना खा खा के तंग आ जाते हैं। अभी तो खानों का रिकमेंडेशन नहीं आया क्योंकि वो आप लाइक्स तो नहीं करते खाने पे, वो तो एक ही खाना होगा डिफरेंट तरीकों से पका होता है।
मसालेदार हो ना मसालेदार हो। हाँ, क्लास में खासतौर पे खवातीन से अगर मैं पूछूं, खवातीन में से कोई भी नहीं है। अरिश्मा है, हुमेरा, और आप दोनों से पूछ लेते हैं, हुमेरा, अरिश्मा। इफ देयर इज अ रिकमेंडेड सिस्टम फॉर फूड, ठीक है, तो एक ही फूड मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से बनाते हैं और फिर खाना खाने के बाद कहते हैं यार बड़ा अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। ये जो यूजर का लाइक्स हैं, स्टार्स हैं, ये कैप्चर नहीं होते, वो ऑडियो में ही, हवा में ही चले जाते हैं। है जी, यही होता है ना ऐसे। तो ये भी एक चैलेंज है कि अगर रिकमेंडेशन सिस्टम अगर आ जाए मतलब खानों में, तो वो कैसे फिर उनके लिए, क्योंकि रिकमेंडर के लिए तो वो रेटिंग्स और वो चीजें चाहिए होती है ना। वो तो हम घर में हवा में ही कह देते हैं यार बड़ा मजेदार था, नहीं मजेदार था, मसाला तेज था, चलो यार 3 स्टार दे दो, 2 स्टार दे दो। तो ये चैलेंजेस हैं। जितनी जितनी किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रिकमेंडेड सिस्टम को, अब कोई बंदा इस तरह सर्च करे कि यार मैं कोई ऐसा इंटरफेस बना दूं जो वर्ड ऑडियो कैप्चर कर ले होटल में यूजर परमिशन के साथ, विद ट्रस्ट, विद प्राइवेसी, ताकि एक नया फूड रिकमेंडर बन जाए, तो ये एक नया वो होगा। क्योंकि सारी चीजें तो फूड पांडा और इस पे नहीं कैप्चर होती ना। बड़ा खाना घर में पकता है पाकिस्तान में, सारे होटलों में थोड़ी जाते हैं या हर वक्त बैठे होते हैं। अब घरों में अगर रिकमेंडर हो, लेट से अब जो है, तो मैं अपनी बीवी को कहता हूँ अक्सर कि यार जरा खाने में इस तरह, उसने बिरयानी बनाई है पहली दफा, अच्छी नहीं बनाई है उसने, लेकिन मैंने कहा नहीं बड़ी अच्छी है, वो समझ गई खैर। लेकिन दूसरी तीसरी दफा जब बनाया उसने तो इतना जबरदस्त उसने बनाया कि फिर मैंने कहा यार वाकई अब हुआ क्या कि यार उसने वो नेट से देखा, एजुकेट के सारी चीजें। इसी तरह ये है कि ये जो चीजें होती हैं, एक तो फीडबैक ओपन लूप पे चीज चलती है, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि जब मैसिव खाने बनते हैं हर वक्त, तो घर में रूटीन की ये आदमी तंग आ जाता है कि यार आजकल जरा नया कुछ बनाए, या आज किसी नई जगह जाते हैं खाना खाने, नए किसी पार्क में जाते हैं। ये सारे रिकमेंडेशन सिस्टम के प्रॉब्लम है। इंसान डाइवर्सिटी, तो इसी किस्म का एक इशू जो है, तो अब यहाँ पे जो आर्टिकल में मैंने जो आर्टिकल भिजवाया हुआ है, एनहांसिंग रिकमेंडेशन और डाइवर्सिटी बाय डुअल, यहाँ पे अप्रोच क्या इस्तेमाल की, यहाँ पर यूजर इंटरफेस एक सेंट्रल सिल्वर बुलेट के तौर पे एक बड़े करामद अंदाज में इंटरफेस में, यानी डुअल एल्गोरिथम पे उसने डाइवर्सिटी नहीं की, डुअल इंटरफेस पे की है। क्या किया ये अब आपने मुझे बताना है। आप बात समझ गए, इस तरह रिसर्च होती है। जी सर। चलें आप देखें इसको, बताएं। A user can select the number of recommendation, the major feature, and the extra feature to visualize the recommendations on the SCAER plot. A major feature is used to rank the results along the x-axis and in the ranked list, section C, while the extra feature is used to show the diversity of results in the selected aspect along the y-axis. To further investigate diversity of displayed recommendations, the user can also use one data aspect as category. Figure 1, A, scatter plot, B, control panel, C, ranking list, D, user pro LE page. To color code the results. E default category was smart balance, which to color code by 4 quadrants with 0.5 ratio. Section C is the standard ranking list, more exactly is a combination of 4 ranked lists produced by 4 recommender engines explained below. To make 4 dimensions more clear, a normalized relevance of each user to the target user generated by each recommender engine is shown on the right side of the ranked list. Section D presents more detailed information about the person selected in the visualization or the ranked list. Among other aspects, 4 of 6 tabs explain visually how the relevance of the selected user to the target user is calculated by each recommender engine. 2.1 Personalized Relevance Model. To rank other ends by their relevance to the target user, the system uses 4 separate recommender engines that rank other ends along 4 dimensions that we call as features, text similarity of their academic publication, social similarity through the co-authorship network, current interests of CN3 activities, and the distance of their relation place to the target user. Each of the feature was denoted as below. The academic feature is determined by publication similarity between 2 ends using cosine similarity 9,18. E function is denoted as sim academic, xy,
equals txti /txti, where t is word vectors for user x and y. Social feature approximates social similarity between the target and recommended user by combining co-authorship, network distance, and common neighbor similarity from publication data. We adopted the depth RST search, DFS, method to calculate the shortest path P14 and common neighborhood, CN. 11 for the number n of co-author overlapping in 2 degrees. Sim social, xy, equals p plus n for user x and y. Interest feature is determined by the number of co-bookmarked papers and co-connected authors of the experimental social system. Function is denet as semi nterst, xy, equals bx, mathematical intersection symbol, by, plus, cx, mathematical intersection symbol, psi, where bx by represent the paper bookmarking of user x and y, cx psi represents the friend connection of user x and y. Distance feature is simply a geographic distance between ends. We retrieve the longitude and latitude data based on ends aliation information. We use the Haber sign formula to compute the geographic distance between any two pair ends. 18 sim dist ans, xy, equals Haber sign, geox geoe, where geo are pair of latitude and longitude for user x and y. 2.2 Diversity Navigation Model. System determines the personalized relevance score for all conference ends. Instead of rank the recommended people by ensemble value, the user can filter the items based on multiple aspects of relevance through our system. Here are 2 kinds of diversity cation. 1. Feature diversity cation. The user can select any 2 pair of proposed features and spot the recommended items through the relevance intersection. All of the proposed features were calculating in a d-arent scale. For example, the distance feature is physical distance by miles versus academic feature by percentage. To let all the features are comparable, we adopted standard z-score to normalize all the features to the same scale from 0 to 1. Function was denet as z-score equals xiuj sigma j, where xc ith recommended item and j represents the corresponding features from 1 to 4. And we use the standard z-table to convert the z-score to the corresponding percentile pi j. Hence, we can list all the features on the same scale for presenting in a ranking list or SCAER plot diagram. 2. Coverage diversity cation, a diversity cation model to help the user select the recommended item from d-arent category. 7. In scatter interface, we color code the item from d-arent categories, e.g. title, position, and country. In rank interface, we listed the category as one column for a user to utilize. We can then measure the user selection diversity through the 2 diversity cation model. We observe the user interaction with from d-arent entrance, feature intersection, 17, e.g. high academic and high social feature or high academic and low social features. Both of the diversity is measured by entropy due. तो यही अगर ग्राफिकली अच्छा होगा तो लेस एफर्ट लगेंगे। जी, क्या हुआ क्या इस आर्टिकल में? व्हाट वाज द थीम ऑफ द आर्टिकल? सर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है सर, जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें 2 तरह के सर इन लोगों ने रिकमेंडर सिस्टम दिए हैं। उसमें से सर जो स्कैटर वन था मेरा ख्याल से सर उसमें हाईली लोगों ने उसको ज्यादा प्रेफर किया। ओके जी सर, बेसिकली इन लोगों ने सर 2 सिस्टम वो ट्राई किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। एक कॉन्फ्रेंस किया टेनिस पे, एक स्कैटर था, एक रैंक बेस था सर। ये जो स्कैटर था ये ज्यादातर वो यूजर सेटिस्फैक्शन, यूजर ज्यादा सेटिस्फाइड थे इसके कि यार किस तरह मुख्तलिफ डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं एट द सेम टाइम गेटिंग द सेटिस्फैक्शन, जो यूजुअली रैंक सिस्टम में नहीं होता। ठीक है जी, ठीक है। और फिर क्या किया इन्होंने, इवेल्युएट कैसे किया कि यूजर सेटिस्फाइड है? सर्वे किया था सर क्वेश्चन के थ्रू। जी जी जी, पहले अच्छा सर्वे किया था, सर्वे के रिजल्ट आए होंगे कुछ। मैं फिर क्वेश्चन भी लेता हूँ। सर्वे किया, सर्वे का क्वेश्चनियर कहाँ से आया?
किसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया? जी भाई बताएं ना, इसमें क्वेश्चनियर जो फॉलो किया लाजमन सर कोई स्टैंडर्ड फॉलो किया होगा, लेकर स्केल टाइप की कि यार सेटिस्फेक्शन आप बिल्कुल वो लिखा हुआ है, वैसे इसमें लिखा हुआ है, देख लें, लिखा हुआ है, देखें जरा इसको। लिखा हुआ है ना, देखें। जी सर, पेयर सैंपल टी टेस्ट। वो तो टेस्ट हो गया ना, टी टेस्ट तो सिंपल टेस्ट हुआ। क्वेश्चनियर का वो जो मतलब स्टैंडर्ड है, एक वैसे लिख लो, रिकमेंडर को जो इवेल्युएट करने का स्टैंडर्ड है वो है रेस्क्यू, RESQUE, रेस्क्यू क्वेश्चन फॉर रिकमेंडर सिस्टम्स। ठीक है, मैं इसका वो भिजवा देता हूँ आपको। ओके। RESQ, रेस्क्यू, एक मिनट, इसका ये आपके पास चैट में है, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, शनिवार हमेशा इसका फॉलो होता है, ठीक है। अच्छा, लिकट स्केल है, वेरी गुड नूरुल्लाह। अच्छा, टेस्ट कौन सा स्टैटिस्टिक इस्तेमाल हुआ? जी कौन सा टेस्ट इस्तेमाल हुआ है? ये पेयर सैंपल टी टेस्ट सर। ठीक है, टी टेस्ट, और उसके नतीजे में फिर कोई चीज सिग्निफिकेंस आई होगी या कुछ आया होगा? बिल्कुल सर, बेसिकली 6 वहाँ पर हमारे पास वो एस्पेक्ट्स थे सर, ट्रस्ट, सपोर्टिवनेस, इंटरेस्ट, सेटिस्फैक्शन, इंटेंशन टू यूज एंड एंजॉयबल, ये वाला फैसिलिटेशन था सर, और कंट्रोल रिवर्स क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कोई बता सकते हैं? चलें, ये तो अच्छा हो गया, चलें, गुड। अच्छा, नतीजा फिर आखिर में क्या आया? यूजर क्या चाहता है? जी वेरी गुड। तो यानी कि डाइवर्सिटी भी कुछ हालात में, कुछ सिचुएशंस में फिर वेरी करती और सपोर्ट करती। ठीक है, चलें, शाबाश, ये तो अच्छी बात हो गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ चीजें आगे जाती हैं। कल को हम डाइवर्सिटी, यार में, सॉरी यार, ये ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा ये शोर आ रहा है, सॉरी। चलो, ये तो एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, टी टेस्ट है, वेरी गुड। स्कैटर इंटरफेस गेट्स द हाई रेटिंग्स। ठीक है, सो दिस इज वेरी गुड उमेरा। काशिफ, यस, टी टेस्ट। ठीक है, चलो, ये बात तो क्लियर हो गई है। अच्छा, अब एक चीज तो हो गई। अच्छा, अब ये एक और आर्टिकल है, ये मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये किसी टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा है सर। अच्छा, नहीं, अभी तो 4:30 नहीं है, आखिरी आर्टिकल करते हैं, छोटा सा है, छोटा सा है। ऑनलाइन क्लासेस में सर ये होता है कि वो ज्यादातर वो फोकस ज्यादा टाइम के लिए मुश्किल होता है कंपेयर टू फिजिकल सर। हाँ, ये है वैसे, ये चले, बस थोड़ा सा, वैसे भी काफी हमने कर लिया। तो ये एक आर्टिकल है, ये जरा देखिए आप नेट पे। ठीक है सर, काइंडली शेयर कर लें। कंट्रोलिंग स्पॉटिफाई रिकमेंडेशन इफेक्ट्स ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक आदमी की अपनी जो क्वालिटीज होती हैं वो उसकी म्यूजिक प्रेफरेंसेस पे कैसे। अब ये एक और रिसर्च पेपर है, बड़ा खूबसूरत है।
इसको भी देखें जरा। हाँ, ये आर्टिकल का टाइटल मैंने भेज दिया, आर्टिकल का टाइटल मैंने भेज दिया। और अच्छा, ये मैं आपको एक भेज रहा हूँ, रिकमेंडर सिस्टम में जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उसके कॉल फॉर पेपर्स में भेज रहा हूँ, ठीक है। ये आजकल रिकमेंडर सिस्टम में काम हो रहा है। इसके साथ साथ इनके वर्कशॉप्स की अगर आप देखें तो इनके वर्कशॉप्स की भी बड़ा नए नए टॉपिक्स हैं। एक तो ये मैंने भेज दिया आपको। अच्छा, अब इसका जरा आखिरी में डिस्कशन करते हैं, इसको जरा ओपन करें, कंट्रोलिंग स्पॉटिफाई म्यूजिक, और इसका मुझे बस जल्दी से बता दें कि इसमें असल में क्या बात है, फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। ओके सर। Call for contributions. Call for papers. We invite you to contribute to the 13th ACM Conference on Recommender Systems RecSize 2019, the ये premier लिंक venue for सर research किसी and applications वेबसाइट of है, वो recommendation लिंक नहीं मिला technologies. सर, जो आप वो पेपर वाला। पेपर वाला नहीं मिला, इसको गूगल सर्च में डाल दो ना, इसको सर्च में डाल दो, अगर नहीं मिलता तो नहीं आ सकती। ठीक है सर, मैं डाल नहीं होता फिर मैं इसको वो करवा देता हूँ। The black box nature of today's recommender systems raises a number of challenges for users, including a lack of trust and limited user control. Providing more user control is interesting to enable end users to help steer the recommendation process with additional input and feedback. However, different users may have different preferences with regard to such control. To the best of our knowledge, no research has investigated the effect of personal characteristics on visual control techniques in the music recommendation domain. In this paper, we present results of a user study on the web using two different visualization techniques, a radar chart and sliders that allows users to control Spotify recommendations. A within-subject design with let and square counterbalancing measures was used for the study. Results indicate that the radar chart helped the Sci-Hub. To Open Science. Millicamp M. Hton, NN, Jin. DOI 10.1145 3,209,219.320. Controlling Spotify recommendations. The black box nature of today's recommender systems raises a number of challenges for users, including a lack of trust and limited user control. Providing more user control is interesting to enable end users to help steer the recommendation process with additional input and feedback. However, different users may have different preferences with regard to such control.
To the best of our knowledge, no research has investigated the effect of personal characteristics on visual control techniques in the music recommendation domain. In this paper, we present results of a user study on the web using two different visualization techniques, a radar chart and sliders, that allows users to control Spotify recommendations. A within-subject design with Latin square counterbalancing measures was used for the study. Results indicate that the radar chart helped the participants discover a significantly higher number of new songs compared to the sliders. We also found that users' experience with Spotify had an influence on their interaction with different musical attributes. The participants who used Spotify frequently and users with a high individual musical sophistication interacted with the attributes significantly more with the radar chart compared to the sliders. Individual musical sophistication also had a significant impact on their interaction with the interaction techniques. The participants with high musical sophistication interacted significantly more with the radar chart in comparison to the sliders. Based on the feedback from our participants, we provide design suggestions to further improve user control in music recommendation. These authors contributed equally to this work. Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and or a fee. Request permissions from permissions@acm.org. Many services that are available on the web today utilize recommender algorithms to suggest personalized contents to their users. Amazon.com, Spotify, YouTube, and Netflix are well-known examples of such services. With the help of recommender algorithms and abundant data, many of these services can provide users with highly relevant items leading to improved user satisfaction and content discovery. All recommender systems, at their basic form, rely on user behavior by recording activities of users who interact with a service or system, or by simply asking users for their preference. While much of previous research has focused on developing and evaluating recommender algorithms, recommender systems still face a number of challenges. One such a challenge is known as the lack of जिस तरह पिछले पेपर में, इस पेपर में क्या था? जी, बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? बाकी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे, क्या हो रहा है भाई? बताएं ना, रडार चार्ट में क्या जिस तरह अभी इन्होंने बेटा ने बताया जी, जिस तरह हमने सर प्रीवियस पेपर में देखा कि वहाँ पर दो सिस्टम्स हैं हमारे पास, इसी में भी इन लोगों ने स्पॉटिफाई इंटरफेस के लिए दो सिस्टम सजेस्ट किए थे, एक रडार था सर और एक हमारे पास वो दूसरा वाला था स्लाइडर। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा सर यूज़र जो यूज़ करते प्रेफर कर रहे थे या ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे विथ रडार सिस्टम कंपेयर टू द अदर स्लाइडर सिस्टम। तो सिमिलरली इन लोगों ने भी टेस्ट अप्लाई किया था सर इसके दोनों के वैल्यूएशन के लिए, जो फाइंड आउट डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी। और डिफरेंस में कौन सी बात सामने आई? डिफरेंस में सर इन लोगों की सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन बिल्कुल
वेरी गुड, ठीक है। दिस इज हाउ यू कम अक्रॉस अंडरस्टैंडिंग। समझ आ गई ना आपको? बिल्कुल सर। बुनियादी, ठीक है। छुट्टी करते हैं? छुट्टी करते हैं अच्छा, सर। एक छोटा सा रिमाइंडर। जी सर। जी बेटा, जी जी जी। वो वही वाला क्विज वाला कि हमारा वो क्विज मैं में देखो, मैं मामला मस्ती के अभी लिए संभाल रहा हूँ। हाँ, वो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता वो पेपर चेकिंग और वो सारे शुरू कर देता हूँ। क्विजेस भी 2 हो गए हैं, 4 पूरे करने हैं ना। हाँ तो बिल्कुल। मैं आपको क्विज आगे पीछे दूंगा और मार्क्स भी लगाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा, मैं आप लोगों को रिकमेंडर सिस्टम भेज दूंगा जो मैंने डेवलप किया। उसको जरा आप यूज कर लें अपने टास्क में, वो उसमें लिखा होगा। वो टास्क करने के बाद क्वेश्चनियर फिल कर देंगे, तो उसमें ये होगा कि फीडबैक मिल जाएगा। और अगर कोई इंटरेस्टेड है इस एरिया, अच्छा, जो इंटरेस्टेड है इस एरिया में रिसर्च में, तो फिर वो मुझे बता दें, उनके साथ भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे 3 आर्टिकल आए में, एक 4 इम्पैक्ट फैक्टर में है, 4.5 में, और 2 2 इम्पैक्ट फैक्टर में आए हैं, 2 में। सर इसी तरह गूगल फॉर्म बनाए सर, फिल कर देंगे। ठीक है, मैं बस आपको इस तरह करूंगा, क्लास में एक तो वो रिकमेंडर में भेजूंगा, तो मैं आपको बेसिकली 2 रिकमेंडर भेजूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक मिनट ना, रिकमेंडर मैं किस तरह का भेजूंगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, एक मिनट, एक मैं आपको इस तरह का रिकमेंडर भेज दूंगा, ये ऊपर वाला जो है, यानी कि यहाँ से आप फाइल डालें, बिब्लियोग्राफी डाल दें, उसको क्लिक कर दें तो ये हमें आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। अच्छा, सॉरी, एक मिनट, ठीक कर देता हूँ, सॉरी, थैंक यू। एक सेकेंड नाउ, ये शेयर। अच्छा, अभी नजर आ रहा है रिकमेंडर? अच्छा, तो एक ये इंटरफेस में भेज दूंगा, जार फाइल होगी। जार फाइल को आप ओपन करेंगे तो ये बिब्लियोग्राफी का सॉफ्टवेयर है। फाइल से आप इसमें बिब्लियोग्राफी क्यों डाल देंगे, BIB फाइल का। खैर कोई मसला हो तो मुझे मैसेज कर दे, मैं ऑनलाइन आपको बता दूंगा। यहाँ से फाइल इंक्लूड कर देंगे, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आ जाएगी, वो जो साइटेशन सर ये गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दे सर। हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल भिजवा दूंगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। इस्तेमाल का तरीका ये है कि बिब्लियोग्राफी आ जाएगी, उसको क्लिक करेंगे, ठीक है सर, सब कुछ कर दे, प्रोसीजर भी सेंड कर दे और ये भी अपलोड कर दे हम कल। हाँ, और दूसरा जो रिकमेंडर का इंटरफेस है वो ये वाला मैं भेज दूंगा। So I'm going to send you 2 रिकमेंडर्स। इसका भी यूज देख ले कि आपके थीसिस में या टॉपिक जो भी मैं आपको टास्क दूं उसमें कैसे ये करामत आ जाता है, और इसमें भी आ जाता है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू अपलोड देम वेरी सून। और ये 2 इंटरफेसेस, दोनों को इवेलुएट आपने करना है। ठीक है सर, ठीक है। एग्जाम की इवैल्यूएशन सर, आपने कहा था कि 2 क्विजेज हो चुके हैं, एक हमारी पेपर हो चुकी है, तो ये मिड टर्म के लिए और या फुल सेमेस्टर के लिए है सर? ये असल में क्विज जो हमें IMS ने कहा, उन्होंने कहा कि तकरीबन 6 क्विज लेने ना, तो 2 ले चुका हूँ मैं। आज एक क्विज इस तरह तो क्विजेज हो जाएंगी, और मिड टर्म हो चुका है बस, फिर इसके अलावा 3 क्विज और एक फाइनल रह गए। सर वो फर्स्ट पेज में सर बहुत सारे लोग जो वो गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं थे सर। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, जरा ऊंचा बोल लें। सर वो फर्स्ट पेज जो था ना सर, तो इस वक्त हम गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं थे ना सर, तो इस वजह से वो मिस हो गया। तो उसको सॉरी, बिल्कुल ऑडियोबल, आवाज ऑडियोबल नहीं बेटा, टेक्स्ट मैसेज में लिख सकते हैं। सर वो कहना चाहता है कि फर्स्ट क्विज में वो क्लासरूम में एडमिट नहीं था, तो वो उसको अभी नजर नहीं आ रहा, वो ड्यू टाइम चला जा चुका है, डेट। अच्छा, चले इसको फिर वो ये तो बहुत शुरू में मैंने लिया था, मुझे याद है फर्स्ट क्विज। हाँ, ये कोर्स वर्क वाले सर वो शुरू में लिया था सर, शुरू में लिया था। और मेरे ख्याल में हमारी क्लास से सबसे आगे है IMS में। जी सर, जी सर, आगे है सर सबसे, बिल्कुल सर। ठीक है, बिकॉज वी लोग जब सीरियसली ऑनलाइन नहीं कर रहे थे, हमने उसको अडॉप्ट किया था टेक्नोलॉजी। बहरहाल चले इन चीजों को हम सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। चले, थैंक यू वेरी मच। कोई इश्यूज थे सर, हमने सेंड किया है, वो काइंडली फिर चेक करें, मैं एड्रेस कर लूंगा इंशाल्लाह, मैं सारे इश्यूज। थैंक यू सो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।